गाइस इस लेक्चर में स्टार्ट करते हैं जेफेट पैरामीटर्स। सो जेफेट पैरामीटर्स के बारे में समझते हैं। पहला जो पैरामीटर है बेटा, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट पैरामीटर डीसी ड्रेन रेजिस्टेंस। डीसी ड्रेन रेजिस्टेंस, इट इज नॉट resistance, and it is also called static resistance. It is also called static resistance. Now first इसकी definition देखते हैं। It is defined as the ratio of drain to source voltage, drain to source voltage to drain current, ठीक है यहाँ तक ना। drain current. Now this DC resistance RDS is VDS upon ID. Now this resistance is calculated in linear oblique ohmic region, ठीक है। That means when the VDS is very small, when VDS is positive but small, and when the output is directly proportional to VDS, clear? That is ohmic region or linear region of the output characteristic curve. Now the second one parameter is called AC drain resistance. AC drain resistance, this is also called as dynamic resistance. Dynamic resistance whose values ranges 500 kilo ohm range, ठीक है। now पहले define करते हैं। it is defined as the ratio of change in drain to source voltage to change in drain current when VGS is constant, clear है यहाँ तक। so this RD is equals to change in VDS upon change in ID when VGS is constant। now this resistance is calculated in active region, that is the region where the Jfet work as a constant current source, clear है। that is also called saturation region. so I hope so दो जो पैरामीटर है आपको क्लियर हो गया होंगे। नाउ थर्ड और फोर्थ पैरामीटर देखते हैं। नाउ थर्ड जो हमारा पैरामीटर है उसका जो नाम है वो क्या है, ट्रांसकंडक्टेंस। दैट इज GM, ठीक है। सो ड्राइव करते हैं पहले इसका डेरिवेशन और डेफिनेशन। सो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ change in drain current to change in gate to source voltage, clear? when VDS is constant, so the GM is defined as change in drain current to the change in VGS when VDS is constant. now its value is its range is 0.1 microsiemens to 20 microsiemens. so it is small. Now in case of Jfet of fat, the gain is directly proportional to
this transconductance. Now transconductance is low, that's why the gain of the FET is also low, and the only parameter that can affect the gain of the FET amplifier is called transconductance. Clear है यहाँ तक? Now अगर मैं इसके proof की बात करता हूँ, then we have a proof. Suppose we have the ID equals to ID SS 1 minus VGS upon VP का square, that is called Shockley equation. Now we are differentiating this equation with respect to VGS. Differentiating this equation with respect to VGS. So start करते हैं del ID upon del of VGS, that is equals to IDSS is constant, then it is 1 minus VGS upon VP, because क्योंकि differentiation में एक पावर कम हो जाएगी, then हम इस एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन करते हैं, इट इज 0 माइनस 1 अपॉन VP. क्लियर है यहां तक? सो दिस पैरामीटर इज कॉल्ड GM that is equals to minus 2 is also there because we have 2 minus 1 differentiation का, so 2 IDSS upon VP, this is VP, then it is 1 minus VGS upon VP. क्लियर है यहां तक? then this value is called GM equals to minus GM naught 1 minus VGS upon VP. Clear? The maximum conductance value. So this is the expression of the transconductance in case of Jfet. Now next thing is what? The fourth point समझते हैं. Fourth point क्या है इसका? Amplification factor. Amplification factor. It is represented by mu. So mu is defined as the ratio of change in VDS to change in VGS. So it is defined as the ratio of change in drain to source voltage to change in gate to source voltage at constant ID, So it is mu is just delta VDS upon delta VGS up at ID constant. ठीक है यहाँ तक ना? अब हमारे पास एक रिलेशन होता है कि जो एम्पलीफिकेशन फैक्टर है और जो डायनेमिक रेजिस्टेंस है और जो हमारा कंडक्टेंस है उसमें क्या रिलेशन होता है, तो उसको डिफाइन कर लेंगे. मैं क्या करता हूं, मैं इस एक्सप्रेशन में डेल्टा आईडी से मल्टीप्लाई भी करता हूं और डेल्टा आईडी से डिवाइड भी करता हूं. देन दिस इज इक्वल टू डेल्टा वीडीएस अपॉन डेल्टा आईडी इनटू डेल आईडी अपॉन डेल वीजीएस. ठीक है ना? डेल आईडी अपॉन डेल वीजीएस इज दिस is conductance, and the change in drain to source voltage to change in drain current, that is called RD. So this is a relation between the mu and GM. So amplification factor is equal to the AC resistance multiplied by the conductance. तो इस एक्सप्रेशन को ध्यान रखिएगा ना. mu की जो वैल्यू होती है, रेंज होती है, that is 2.5 to 150. अब इसकी कोई यूनिट नहीं होगी because it is change in because it is the ratio of the same two quantity, that why it is unitless. So it is unitless. ठीक है यहाँ तक बेटा? आई होप से ये बात समझ में आ गई. तो आपको चारों पैरामीटर जो हैं Jfet के समझ में आ गए होंगे ना. इसी में हम लोग एडअप करते हैं एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन पार्ट ऑफ द Jfet. तो स्टार्ट करते हैं एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन को. नाउ एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन पार्ट को समझते हैं. तो सबसे पहले देखते हैं एडवांटेज. Jfet is simple to fabricate, that is its designing is very easy, compact in size, that is very small in size, longer life, higher efficiency, higher input impedance, and input impedance of Jfet is of 100 mega ohm order, that by the input bias current is less. Low noise because only one charge carrier, only one charge carrier, that's why they are less noisy. High power gain, high frequency response, and better thermal stability. Now these devices are giving better thermal stability because as the temperature increases, the mobility of the electrons decreases. Now next one is drawback, low voltage gain. Since the voltage gain is directly proportional to the conductance and conductance is low, that's why these amplifiers is having low voltage gain, just because of low conductance. Now next is smaller gain bandwidth product as compared to BJT. So BJT की कंपेयर में इसकी जो bandwidth gain bandwidth product है वो कम होती है. And next is
हायर कॉस्ट देन द बीजेटी। तो ये मेन ड्रॉबैक है, बट जो मोस्टली पूछा जाता है पेपर्स में वो आपको ये मिलेगा, लो वोल्टेज गेन। नेक्स्ट है एप्लीकेशन वोल्टेज वेरिएबल रजिस्टर, देन नेक्स्ट है मल्टीप्लेक्सर, चॉपर एम्पलीफायर, बफर एम्पलीफायर, कैस्केडेड एम्पलीफायर, करंट लिमिटर एंड वोल्टेज रजिस्टर। तो जो वोल्टेज वेरिएबल रजिस्टर है इसको बोलते हैं हम लोग लीनियर रीजन में, जब लीनियर रीजन में जब ये काम करता है तब। क्लियर है? देन वी हैव मल्टीप्लेक्सर, चॉपर के लिए बेस्ट चॉइस है कैस्केडेड एम्पलीफायर, करंट लिमिटर एंड द वोल्टेज कंट्रोल रजिस्टर। नाउ जो जेफेट है उसका मेन जो एप्लीकेशन है वो कौन सा एप्लीकेशन है, अगर मैं 8th की बात करूं, एज ए करंट सोर्स, एज ए कांस्टेंट करंट सोर्स एंड when this Jfet is working as a constant current source, it is behaving in active region or in saturation region. But जो BJT है that works in only active region, no saturation. So the region of operation is different as compared to BJT and Jfet. Hopefully आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज जो एप्लीकेशन पार्ट है वो क्लियर हो गया होगा।